लाओ तो भाई कौन है थोड़ा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे अरे छाता बंद करूँ? अरे ये नहीं, छाता बंद कर दो यार। छाता पीछे कर दो। क्या कर छाता छाता यार क्या करती है बहुत। जय श्री राम। हो गया बारिश भी बंद हो गई। तो बनाया हुआ है ले जाऊं? नहीं तो दो नहीं जाए एक ही। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको तो सरकार तो प्रोत्साहन तो देगी। तो सरकार का जनता का सबसे बड़ा वर्ग होता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद जो होती है टैक्स स्लैब्स को लेकर के, टैक्स में अधिक कुछ और रिलैक्सेशन मिल सकते हैं। उसके बाद टैक्स रिलैक्सेशन या टैक्स के जो स्लैब्स है उसमें कुछ चेंज करने की कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं? गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन इंटरिम में शायद कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगी। गुंजाइश तो बहुत है कि बस टैक्स स्लैब्स या जो अपने जो नए टैक्स रेजिम है उसमें अगर कुछ और सहूलियतें दी जाएंगी तो शायद लोग न्यू टैक्स रेजिम अपनाएंगे। तो लेकिन इंटरिम बजट में ये अनाउंसमेंट होगी कि नहीं, मुझे जरा डाउट लग रहा है। टैक्सेशन को लेकर एक चीज है कि सरकार ने लगातार पिछले 10 सालों में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एनोमलीज जो है उस पर तरफ ध्यान दिया है कि आपराधिक ना मानते हुए इसे गलतियां मानते सुधारने का मौका दिया जाए टैक्सेशन में। इस बार भी क्या वो जो पॉजिटिव अप्रोच है सरकार का टैक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को दबाव डालने की बजाय प्रोत्साहित करने के लिए, विवाद से विश्वास का जो नीति रही है सरकार की, उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, वो तो बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डीक्रिमिनलाइजेशन जो हमारे इतने सारे लॉज है, इतने सारे लॉज जो बहुत ही यानी ऑलमोस्ट ब्रिटिश काल से वो लॉज है, उनको तो डीक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। और वो तो एज ऑनगोइंग प्रोसेस, उसे हम एक बजट में करेंगे या दूसरे, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस, उससे तो बहुत साल लगने वाले हैं। और फिलहाल जो हमारे माइक्रो नंबर्स है काफी स्टेबल है वो, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो लगातार परेशान किए हुए पिछले 1.5-2 साल से सरकार उससे लड़ रही है। आरबीआई ने भी काफी सारे कदम उठाए, लेकिन महंगाई जो है उसका कहीं ना कहीं बजट में भी असर दिखेगा। तो महंगाई का जो इन्फ्लेशन का जो पार्ट है वो बजट में आप किस तरीके से देख रहे हैं? बजट देखो, महंगाई का जो है वो तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट कर रही है, हर 2 महीने में वो तो कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बजट में कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दिखाई देंगे। जो भी है वो बेसिकली वुड बी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है।
और अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, जहां हमें अभी 5.9 पे है, 4.5 पे लाना है, तो उसके हिसाब से बजट पे होता है। इन्फ्लेशन की आई थिंक आरबीआई इज इन कंट्रोल ऑफ इट। सर, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इंटरिम बजट होने के नाते, वोट ऑन अकाउंट होने के नाते, तो सरकार के पास कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे एक चुनाव से ठीक पहले लोक लुभावने बजट का? सरकार के पास स्पेस है, लेकिन ये सरकार मैच्योर सरकार है, वो लोगों को लुभाने के लिए बजट नहीं प्रिपेयर करेगी। थैंक यू। थैंक यू। लाओ बत भाई कौन है? थोड़ा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे इसको अरे छाता बंद करूँ? अरे ये नहीं, छाता बंद कर दो यार, छाता पीछे कर दो। क्या कर Present government, what do you expect personally from this budget, and what kind of announcements you are expecting in this budget? I think this is an interim budget. So in that sense, I think this budget will underscore what the government has done in the past and what it will expect to do in the future. That is, it will be an interim budget and then they will do a final budget later to underscore that. If you look at the current environment in the context of the geopolitical tensions or before that the pandemic, I think the Indian government has done well to keep the economy doing very well. We're today the 5th largest in the world, growing at 6.5%, and we will be in the next few years the 3rd largest economy in the world. I think the government will continue to underscore its efforts in infrastructure. They have encouraged defense. I'm sure they will give a fillip to investments in space. They will work on roads, rail, airports, and build in looking at the way the world is looking at India, looking at the China Plus One strategy. Maybe they will try to give a fillip to manufacturing and also they should protect a little bit the Indian industry from maybe cheap imports that may be coming from other parts of the world, so that manufacturing grows और हमारी जो आत्मनिर्भरता है उस पर हमारा ज़्यादा जोर लगा जाए. In past 10 years, we have seen this government in every budget comes with something which is a very different kind of initiative. Like just before the election in 2019, we have seen Krishi farmers benefit scheme, which was Kisan Samman Yojana. So in this budget also, do we expect something very out of the box scheme or something which change the scenario in any sector? I think interim budget hai, so there will be some limitation. I mean, but I think they will underscore their priorities. See, the other thing I also think is when you look at the demographic dividend that the country has, we have such a large young population. You need to also skill them if you need them to be ready for the kind of infrastructure, defense, space, agriculture, precision farming. Then so that needs to be also, and the whole startup infrastructure that they also need to create. So I think they will continue to build this ecosystem to build a virtuous cycle so that India continues to grow at 6.5% and more. India is definitely feeling some pressure from the fiscal deficit side. It's already 5.9. So investing in infrastructure is a very prime aim of this government we have seen in past many years. But how much liberty is they have seeing the present fiscal deficit and in this target of 4.5? So I think they had always said that they would be expecting to come to 4.5%, and so that was always meant to be a sort of a landing rate to get to there. And if I see the way the government they have moved, monetary policy and fiscal policy have worked hand in hand.
So you look at the Finance Ministry and you look at the RBI, they have worked largely in a very concerted fashion to make sure that also inflation remains within check and they continue to improve year on year. In past few years, we have seen that government is quite ambitious for a 5 trillion economy, and now the other agencies are also supporting the claim of Indian government that by 2030 will be a 7 billion economy, and the ambition of the government is to make India a 30 trillion economy by 2047. So, do you see something very out of the box in this budget which supports the aim of 30 trillion economy by 2047 or 7 trillion economy by 2030? I think the aim of the government is to continue on the trajectory they are at. 6.5% they are growing, and the push in infrastructure is only going to help speed up the private participation in the sector, in the growth of the economy. So I think what they need to do is to keep the economy going as it is, and थोड़ा सा tweak करते रहेंगे, so it should improve and not go down. सर मिडिल क्लास जो है उसकी हमेशा उम्मीद कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब्स में रिलैक्सेशन की या टैक्स के जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है. इस बजट में सरकार कितना उस तरफ जा सकती है कि मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करें, थोड़ा और स्पेंडिंग के लिए उनके हाथ में पैसा छोड़ने की कोशिश करें? सर आईएमसी की तरफ से तो हमने ये उनसे मांग की है कि थोड़ी जो टैक्स की प्रोसेसेस है वो सिंप्लीफाई की जाए, एंड सो दैट इज हाउ व्हाट वी लुक एट. इवन इफ यू सिंप्लीफाई देम देयर विल बी अ ग्रेट रिलीफ अलॉन्ग विद एनी रैशनलाइजेशन ऑफ स्लैब्स. और सर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, पहले जीएसटी अपने आप प्लेस में है, लेकिन जीएसटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग कई सारे चेंजेस की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं. पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने की एक बड़ी डिमांड है जो कि लोगों को रिलीफ दे सकती है, लेकिन उस पर कुछ खास हो नहीं रहा. तो आप कैसे देखते हैं इस बार बजट में कुछ संभावना है उस बारे में, पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने के कुछ और? तो पेट्रोलियम के बारे में इतनी हमारी राय नहीं है, लेकिन हमने सरकार से यह दरख्वास्त की है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और ऑल्सो जो नॉन प्रॉफिट के लगे हुए टैक्स है वो सब प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाए. सर मैं बार बार एक बात करूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना इस सरकार की परंपरा रही है बजट में जी. इस बार आप कुछ उम्मीद करेंगे कुछ ऐसा, क्योंकि चुनावी साल है, सरकार पूरी तरीके से ईज्ड है मैक्रो नंबर्स को लेकर के, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कि स्पेंडिंग को लेकर? उम्मीद तो करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती हैं. शुक्रिया. And this also gives a confidence that we can consolidate it further. And next year, perhaps we could look at even lower benefit. IMF has forecast a good year for India. Basically, India has emerged as a brighter spot among the global economies. So, how does industry see it? How does you see it on the basis of how will the industry will perform? And do you see positive? Are you confident that the industry will perform good? I think the stage is set for industry to perform well, and the fact that interest rates are not increasing anymore, the fact that the inflation is range bound, the fact that the government is likely to continue the spend on the infrastructure and welfare schemes, the fact that the social security net to the vulnerable people looks within a tolerable range, and therefore any likelihood of unrest because of that is not going to be there. I think it's all set for industry to invest, perform much better. The only thing I see is that on demand side, because of the relatively higher inflation of the past, people need more money in hands to spend. And therefore, that is an area where more money in hands of the people through policy interventions, through tax interventions, through other economic initiatives would be an area of focus in the full budget and not so much in the interim budget. Thank you so much. मैडम आगे
मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे इसको मैम यहीं पे ही बस मैम बस अरे छाता बंद करूँ? अरे ये नहीं छाता बंद कर दो यार, छाता पीछे कर दो। क्या करें छाता यार क्या करती है बहुत जय श्री राम हो गया, बारिश भी बंद हो गई। तो बनाया हुआ है ले जाऊं? नहीं तो दो नहीं जाएगा एक ही। Budget. So in that sense, I think this budget will underscore what the government has done in the past and what it will expect to do in the future. That is, it will be an interim budget and then they will do a final budget later to underscore that. If you look at the current environment in the context of the geopolitical tensions or before that the pandemic, I think the Indian government has done well to keep the economy doing very well. We're today the 5th largest in the world, growing at 6.5%. And we will be in the next few years the 3rd largest economy in the world. I think the government will continue to underscore its efforts in infrastructure. They have encouraged defense. I'm sure they will give a fillip to investments in space. They will work on roads, rail, airports, and build in looking at the way the world is looking at India, looking at the China Plus One strategy, maybe they will try to give a fillip to manufacturing and also they should protect a little bit the Indian industry from maybe cheap imports that may be coming from other parts of the world, so that manufacturing grows और हमारी जो आत्मनिर्भरता है उस पर हमारा ज़्यादा जोर लगा जाए. In past 10 years, we have seen this government in every budget comes with something which is a very different kind of initiative. Like just before the election in 2019, we have seen Krishi farmers benefit scheme, which was Kisan Samman Yojana. So in this budget also, do we expect something very out of the box scheme or something which changes the scenario in any sector? I think interim budget has, so there will be some limitation. I mean, but I think they will underscore their priorities. See, the other thing I also think is when you look at the demographic dividend that the country has, we have such a large young population. You need to also skill them if you need them to be ready for the kind of infrastructure, defense, space, agriculture, precision farming,
Then so that needs to be also, and the whole startup infrastructure that they also need to create. So I think they will continue to build this ecosystem to build a virtuous cycle so that India continues to grow at 6.5% and more. India is definitely feeling some pressure from the fiscal deficit side. It's already 5.9. So investing in infrastructure is a very prime aim of this government we have seen in past many years. But how much liberty is have seeing the present fiscal deficit and in this target of 4.5? So I think they had always said that they would be expecting to come to 4.5%. And so that was always meant to be a sort of a landing rate to get to there. And if I see the way the government moved, they have moved, monetary policy and fiscal policy have worked hand in hand. So you look at the finance ministry and you look at the RBI, they have worked largely in a very concerted fashion to make sure that also inflation remains within check and they continue to improve year on year. In past few years, we have seen that government is quite ambitious for a 5 trillion economy, and now the other agencies are also supporting the claim of Indian government that by 2030 will be a 7 billion economy, and the ambition of the government is to make India a 30 trillion economy by 2047. So, do you see something very out of the box in this budget which supports the aim of 30 trillion economy by 2047 or 7 trillion economy by 2030? I think the aim of the government is to continue on the trajectory they are at. 6.5% they are growing, and the push in infrastructure is only going to help speed up the private participation in the sector, in the growth of the economy. So I think what they need to do is to keep the economy going as it is, and थोड़ा सा tweak करते रहेंगे, so it should improve and not go down. सर मिडिल क्लास जो है उसकी हमेशा उम्मीद कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब्स में रिलैक्सेशन की या टैक्स के जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है. इस बजट में सरकार कितना उस तरफ जा सकती है कि मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करें, थोड़ा और स्पेंडिंग के लिए उनके हाथ में पैसा छोड़ने की कोशिश करें? सर आईएमसी की तरफ से तो हमने ये उनसे मांग की है कि थोड़ी जो टैक्स की प्रोसेसेस है वो सिंप्लीफाई की जाए. एंड सो दैट इज हाउ व्हाट वी लुक एट. इवन इफ यू सिंप्लीफाई देम देयर विल बी अ ग्रेट रिलीफ अलॉन्ग विद एनी रैशनलाइजेशन ऑफ स्लैब्स. और सर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, पहले जीएसटी अपने आप प्लेस में है, लेकिन जीएसटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग कई सारे चेंजेस की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं. पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने की एक बड़ी डिमांड है जो कि लोगों को रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसको कुछ खास हो नहीं रहा. तो आप कैसे देखते हैं इस बार बजट में कुछ संभावना है उस बारे में, पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने के कुछ और? तो पेट्रोलियम के बारे में इतनी हमारी राय नहीं है, लेकिन हमने सरकार से यह दरख्वास्त की है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और ऑल्सो जो नॉन प्रॉफिट के लगे हुए टैक्स है, वो सब प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया है. सर मैं बार बार एक बात करूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना ये सरकार की परंपरा रही है बजट में. जी. इस बार आप कुछ उम्मीद करेंगे कुछ ऐसा, क्योंकि चुनावी साल है, सरकार पूरी तरीके से ईज्ड है मैक्रो नंबर्स को लेकर के, तो ऐसे में क्या? बहुत बढ़िया, मैडम की गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है. अरे अम्ब्रेला, अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो. बोलना पड़ेगा सर, कैमरा लगे इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना सर. सर सर अम्ब्रेला सर, अभी नहीं पहले. हाँ उनके पास है छाते. ये मंत्री हरिंदर जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए कुछ समाधान करें. गाड़ी आ रही इनको बोलो छाता उस तरफ वाले रखो. अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ. सर इनको फ्रेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर शाबाश.
थैंक यू सर। अपनी बोर्ड की द्वारा सही है तो बोल दिया। ये आ गया। मैंने गिनवा गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अबे अरे अम्ब्रेला अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो। बोलना पड़ेगा सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर। अभी नहीं, पहले उनके पास है छात्र, ये मंत्री सोनवाल। जल मंत्री जल्द, अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए कुछ समाधान करें। इनको बोलो छाता उस तरफ वाले रखो। अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ। सर और भी आ गया। इनको फ्रेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर शाबाश। थैंक यू सर। अपनी बोर्ड की द्वारा सही है तो बोल दिया। ये आ गया। मैंने गिनवा गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अबे अरे अम्ब्रेला अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो। बोलना पड़ेगा सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर। अभी नहीं, पहले उनके पास है छात्र, ये मंत्री सोनवाल। जल मंत्री जल्द, अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए कुछ समाधान करें।
इनको बोलो छाता उस तरफ वाला रखो। अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ। सर कोई और भी आ रहा इनको फ्रेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर शाबाश। है। थैंक यू सर। अपनी बोर्ड की द्वारा सही है तो बोल दिया। ये आ गया। शाम में निकलूंगा। तुम कहाँ हो? गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत सही। यही शॉट है। अबे अरे अम्ब्रेला अबे ये लो। ये यार। अरे सर इधर भी देख लिया करो। बोलना पड़ेगा सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं, पहले हाँ उनके पास है छाते। ये मंत्री सोनू जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए कुछ समाधान करें। इनको बोलो छाता उस तरफ वाला रखो। अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ। आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। मेरा लाइव चल रही है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिशिर चौरसिया यहाँ पर मौजूद है। और आज देश के लिए बड़ा दिन है। आज बजट 2024 यानी कि एंटरिम बजट यहाँ पर पास होगा। 11 बजे वित्त मंत्री जो है संसद में जाकर उस पूरे अपने बजट को पिटारे को खोलेंगे और उससे क्या क्या निकलेगा, किसके किसके नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, हर किसी की नजर होती है। ये आपको बता दें एंटरिम बजट है क्योंकि इस साल 2024 है। इस समय लोकसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट यहाँ पर है। लोगों की कमोबेश बहुत सारी यहाँ पर उम्मीदें भी आज टिकी हुई है। कई लोगों को कहना है कि हो सकता है कि आज वाला जो ये बजट है ये चुनाव से भी प्रेरित हो सकता है। इसमें चुनावी तमाम तरीके के ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि लाभ मिले। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं शिशिर जी आपसे बात करना चाहूंगा। पेटीएम जो है ट्रेंड कर रहा है, सुबह से आज पेटीएम टॉप ट्रेंड कर रहा है हर जगह। एक दिन पहले जो है उन पर शिकंजा कसता है उनके बैंकों पर, पेटीएम बैंक पर। उसके बाद से आज जो उसके शेयर भी धड़ाम हो जाते हैं। मतलब आज दो बड़ी खबर, एक तो
जो दाम बढ़े हैं सिलेंडर के, और आज जबकि अभी बजट शुरू होगा 11 बजे, अब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद पहुंच चुके हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है 11 बजे से। अब यहाँ पर अपना जो अंतरिम बजट है वो पास किया जाएगा। शिशिर जी, पहले मैं दो बड़ी बातें जो आज सुबह जो हलचल हुई है वो एक तो प्राइस इंक्रीज जो हुआ है, और दूसरा जो कि पेटीएम के शेयर धड़ाम हुए हैं, उन दोनों बातों में आपसे विस्तार से मैं जानना चाहूंगा। पहली बात पेटीएम की, तो पेटीएम के शेयर आज लोअर सर्किट में जाएंगे, ये कल से ही इसकी पूरी संभावना थी। कल शाम ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश के बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने पेटीएम पे कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी। पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि उसका पेमेंट बैंक है, उस पर उन्होंने कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके साथ ही उसके तमाम चीजों पर, वॉलेट पे, फास्टैग पे, सब पे प्रतिबंध की घोषणा हो गई। और ये आज इस महीने, मतलब फरवरी महीने के अंतिम दिन 29 तारीख तक ये वैलिड होंगे उनके, उसके बाद सारे अनवैलिड हो जाएंगे। मतलब कि आप पेटीएम के वॉलेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके फास्टैग का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इन सब प्रतिबंधों के चलते ये माना जा रहा था कि जैसे ही आज बाजार खुलेगा, पेटीएम के शेयरों में कोहराम मचेगा, और ऐसा ही हुआ। कल बाजार से जितने पे पेटीएम का शेयर बंद हुआ था, उससे आज 150 रुपए से भी ज्यादा गिरते हुए इसका 20% का लोअर सर्किट था, तो लोअर सर्किट में फंसा। अब इसका ट्रेडिंग बंद है, तो इसका जब सर्किट खुलेगा तब उस पर कोई चर्चा होगी। दूसरी बात आपने की एलपीजी गैस सिलेंडर हाइक की, तो एलपीजी गैस सिलेंडर का बजट से कोई लेना देना नहीं। इसलिए बजट से लेना देना नहीं है क्योंकि हर महीने की पहली तारीख और 15 तारीख को सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां अपने प्राइस का रिवीजन करती हैं। तो इसी रिवीजन के चलते आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को उन्होंने पेट्रोलियम एलपीजी के सिलेंडर के दाम में समीक्षा की। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम चढ़े हुए हैं। क्रूड ऑयल के दाम जब चढ़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम सिलेंडर के भी दाम बढ़ने थे। और अभी आपको खबर बता दें कि पार्लियामेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट के बस्ते के साथ पहुंच गई हैं, और वो पार्लियामेंट में इस समय पत्रकारों को और फोटोग्राफरों को वो दिखा रही हैं, और एक तरह से कहिए कि फोटो सेशन करवा रही हैं। इसके बाद वो जाएंगी, अभी प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, और इस पर एक कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में जो भी प्रस्ताव है उसको कैबिनेट से अनुमति ली जाएगी, उसके बाद इसको दिन में 11 बजे पेश किया जाना है। शिशिर जी, ये इस एक बार ये पूरी प्रक्रिया को आप समझा दीजिए। आपने बहुत सारे अपने आंखों के सामने ये बजट पास होते हैं, पार्लियामेंट में जाके ये जी जी शिशिर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शिशिर जी, शिशिर सर, आवाज आ रही मेरी आपके पास? शिशिर जी, आपकी आवाज आ रही है जी, सुन पा रहे हैं?
आगे चल, बस 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 इधर रोक दी और आगे आगे थोड़ी देर आगे ले, बस 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 बस। अरे भैया झाड़ू, अरे भैया झाड़ू। फर्स्ट दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीछे जो प्रति मेंबर ले आते हुए लास्ट का जो फाइल है उसमें बजट की जो प्रति है वो दिखाते हुए, और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद यहाँ से वो संसद भवन के साथ वित्त राज्य आगे चढ़ जाए। मैम मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैडम सेंटर, मैम सेंटर। बैठक के बाद बजट को कैबिनेट की बैठक में रखी गई, बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैडम सेंटर, मैम सेंटर। बैठक के बाद बजट को कैबिनेट की बैठक में रखी गई, बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैडम सेंटर, मैम सेंटर। अरे
मैं मैम मैम सेंटर मैम सेंटर मैडम सेंटर मैम सेंटर बैठक के बाद बजट को कैबिनेट की बैठक में रखेगी, बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम मैम सेंटर मैम सेंटर मैडम सेंटर मैम सेंटर बैठक के बाद बजट को कैबिनेट की गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अरे अम्ब्रेला अबे ये लो। अरे सर इधर भी देख लिया करो। बोलना पड़ेगा सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं, पहले उनके पास है छात्र, ये मंत्री सोनो। जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए समाधान करें। इनको बोलो छाता उस तरफ वाले रखो, अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ। सर कोई और भी आया इनको फ्रेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर शाबाश, थैंक यू सर। अपनी बोर्ड की द्वारा तो बोल दिया। अंडर बजट का सभी को इंतजार है और वो कुछ ही मिनट आप बचे हुए हैं, लगभग 45 मिनट के बाद में आप जो है संसद भवन पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण, और वो आज इंटरिम बजट में वो सारी जो लोगों को उम्मीदें हैं उनके मुताबिक क्या क्या है। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, हम जिससे डिस्कस कर रहे हैं बजट के पहले कि क्या कुछ आज जो अंतरिम बजट पास होने वाला है उसमें रोजगार के क्या होगा, क्या टैक्सेस स्लैब क्या हो सकता है, उसमें जो है किसानों के लिए क्या हो सकता है। चूंकि सिसे चौरसी हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया था, लेकिन फिर से वापस हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ पूछूंगा शिशिर जी से
शिशिर जी, इसकी एक प्रोसेस है, जो बजट की पूरी एक प्रोसेस होती है, एक नियम होते हैं सारे। एक बार आप दर्शकों को वो बजट का प्रोसेस समझे, क्योंकि 11 बजे से तो फिर वो भाषण शुरू हो जाएगा और हम सब लोग वो उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बार ये प्रोसेस इसकी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे कि संसद भवन के अंदर जब जाते हैं उसके पहले क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, प्रोसेस तो पहले ये है कि बजट टीम बजट तैयार कर रही है। बजट तैयार हो गया, बजट की छपाई हो गई। सुबह सुबह वित्त मंत्री अपने आवास से आई, नॉर्थ ब्लॉक गई, अपने कमरे में गई होंगी और वहां से उन्होंने बजट का पेपर कलेक्ट किया। जो अंतिम बजट का जो बजट प्रस्ताव, जो बजट भाषण उनका है, उसको अंतिम रूप दे दिया गया था कल रात में ही। आज सुबह आके उसको एक सरसरी निगाह उन्होंने डाली, एक बार पढ़ लिया, सब चीज ठीक है। उसके बाद उसको लेके वो राष्ट्रपति भवन चली गई। राष्ट्रपति भवन में जाके वहां जो जरूरी प्रक्रिया है पूरी करके वो पार्लियामेंट आ गई है। अभी अभी पार्लियामेंट वो पहुंची हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं, कैबिनेट के सारे सहयोगी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब संसद भवन में पहले बजट प्रस्तावों को कैबिनेट से संतुष्टि ली जाएगी। जब कैबिनेट उसको क्लियर कर देगा, उसके बाद वो उस बजट प्रस्तावों को 11 बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो जरूरी प्रक्रिया है उसी के लिए अभी वहां गई हैं। वहां पार्लियामेंट में अभी थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट से उसको ओके किया जाएगा, उसके बाद उसको पढ़ेंगी। मतलब बजट भाषण खत्म होने के बाद उसको फिर पार्लियामेंट में समर्पण करेंगे, दोनों सदनों में बजट पेश होगा। उसके बाद उस पर जो भी जरूरी चर्चा होगी, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, और उसके बाद बजट पारित करने की कार्रवाई शुरू। हमारे साथ सीए हैं कमलेश कुमार, वो भी वहां पर जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले जी आज के बजट में सबसे खास क्या होने जा रहा है, क्या क्या संभावनाएं हैं, किसके सेक्टर को क्या क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि 11 बजे से फिर तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या उम्मीदें लगाते हैं? देखिए, यूं तो ये बजट पूरा बजट नहीं, अंतरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है। परिपाटी यही है कि जैसे नई सरकार का गठन मई में होना है, तो मई में नई सरकार के बनने से पहले तक, चूंकि अभी जो पिछले साल का बजट आया है उसमें इस साल के 31 मार्च तक ही सरकार को पैसे खर्च करने के लिए अधिकार मिले हुए हैं और बजट मिला हुआ है। 1 अप्रैल के बाद इनके हाथ में 1 पैसे नहीं रहेंगे। नई सरकार का गठन मई में होना है, फिर नई सरकार का गठन होगा, बजट पेश होगा, जून में जुलाई तक पारित होगा। तो तब तक के लिए सरकार को खर्च करने के लिए, दैनंदिन कामकाज सरकार का चलता रहे, इसके लिए अंतरिम बजट लाया गया है। तो माना यही जाता है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, लेकिन यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इससे पहले भी, इससे ठीक 5 साल पहले के अंतरिम बजट को याद कीजिए। दिवंगत अरुण जेटली जी ने उस समय अंतरिम बजट पेश किया था। उन्होंने कर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की थी। हमारे इनकम टैक्स के विशेषज्ञ सीए कमलेश जी हमसे जुड़े हैं, वो बताएंगे आपको कि कर से जुड़ी उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी। उससे पहले भी जब जब अंतरिम बजट पेश हुआ है तो कुछ वित्त मंत्रियों ने कुछ कुछ बड़ी घोषणा कर दी है। तो इस बार भी माना जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा कर सकती है वित्त मंत्री। शिशिर जी, क्या किसानों, महिलाओं और गरीबों पर फोकस रहने वाला है? नई हाउसिंग लोन सब्सिडी स्कीम की घोषणा हो सकती है, हाइब्रिड कारों के लिए टैक्स में कटौती की यहाँ पर घोषणा हो सकती है, या पीएसयू प्राइवेटाइजेशन का विनिवेश टारगेट में कमी, इन सब पहलुओं पर नजर होगी? बिल्कुल नजर होगी। किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी बात तो है कि टैक्स प्रस्ताव से जुड़ी घोषणा के बारे में लोग, आपको याद होगा ये किसान सम्मान निधि के बारे में जो घोषणा हुई थी, वो पिछले साल अंतरिम बजट में ही इस बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। तो इस बार भी इसीलिए माना जा रहा है कि किसानों के लिए या असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए या मनरेगा बजट के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हो सकता है कि कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा हो सकता है रोजगार के क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी घोषणा हो जाए। और मध्यम वर्गीय तो इनकम टैक्स, खास करके डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स को लेकर तो सशंकित और आशान्वित दोनों हैं। सोच रहे हैं कि इस बार कुछ हो।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि नहीं, अभी जो चल रहा है कि एक प्रीवियस वाला एक न्यू टैक्स स्कीम है, तो हो सकता है एक ही स्कीम बचे। अब देखिए, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद वित्त मंत्री अपने पत्ते खोले। आपका क्या कहना है कमलेश जी, क्या हो सकता है? सर नमस्कार सभी दर्शकों को। सर देखिए, जहां तक अभी एक बहुत लोगों के बीच बड़ी कंफ्यूजन रहती है हमेशा, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में भी दो कैटेगरी था, 2023 तक अलग है, 23-24 के लिए अलग है। तो बहुत लोगों में, आम लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहती है कैलकुलेशन की, मैं नए टैक्स में रहूं या पुराने में रहूं वगैरह वगैरह। तो अब ये से एक्चुअली सरकार जो चाहती है, जिस तरीके से बेनिफिट्स लास्ट ईयर दिए गए थे कि भाई स्लैब रेट बढ़ा के 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख किए थे न्यू टैक्स रिजीम में, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं किया गया था। मीनिंग देयर बाय ये सरकार प्रमोट करना चाहती है लोग नए टैक्स रिजीम में आए, इसलिए वो इस लिमिट को, हो सकता है क्योंकि ये एक इलेक्शन का पीरियड भी है, तो हो सकता है ये लिमिट 7 लाख को बढ़ा के 10 लाख भी किया जा सकता है। 87A की रिबेट बढ़ाई जा सकती है इस मॉड्यूल से। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हालांकि जैसे अभी सीसी जी कह रहे थे कि ये इलेक्शन का टाइम था है और ये इंटीरियम बजट है, बट सरकार सिर्फ कुछ भी कर सकती है। इंटीरियम बजट लाके मई तक, जुलाई जून तक जाएगा, उसके बाद दोबारा बजट आएगा, फाइनल बजट, वहां पर रेगुलेट कर सकती है। तो ये टैक्स छूट में देने की संभावना है। हो सकता है कि अगर न्यू टैक्स रिजीम का लिमिट 7 लाख से बढ़ा के 8 लाख 10 लाख कर दिया जाए, नॉन टैक्सेबल जो 87A वाली कैटेगरी है, और ओल्ड टैक्स रिजीम को अगर ये साथ में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं किया, 2.5 लाख की एग्जम्पशन, जो कि बहुत कम है, ये 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है अगर ये कंटिन्यू रखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को। जी, क्या यहाँ पे कमलेश जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर रहेगा कि जिस तरह से रॉयटर्स के एजेंसी के मुताबिक उसमें बताया गया था कि पीएम किसान के तहत महिला किसानों को मिलने वाली जो राशि है उसको 12,000 रुपए किया जा सकता है। इस योजना के हर एक किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। सरकारी जो इसका आंकड़ा है उसके मुताबिक किसानों की कुल आबादी में जो महिलाओं की है वो 60% है। मतलब नारी शक्ति पर भी इस बजट में फोकस करने की मुझे लग रहा है सरकार पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि 26 जनवरी के मौके पे सारा वुमेन पावर पूरा दिख रहा था, तो उसको ध्यान में रखा जाए तो ये बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखो, चाहे मेल या फीमेल, कोई भी वुमेन क्योंकि कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने की संभावना है, तो ये राशि बढ़ाई जा सकती है। और इससे जो छोटे किसान हैं उनको बहुत फायदा है, क्योंकि जिनके पास 2 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है, वो बड़े पैमाने पे कृषि नहीं कर सकते। उनको बहुत काफी कुछ मैनुअल करना पड़ता है, जिसमें इनको बीज खरीदने के लिए और जो खरपतवार फर्टिलाइजर्स वगैरह, फर्टिलाइजर यूज करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मैं कुछ किसानों से डायरेक्ट बात करता हूँ, जिससे पता लगता है कि उनको ये जो राशि मिलती है उनको बहुत हेल्प होती है। जी, बजट में ये क्या टैक्स पेयर्स को क्या उम्मीद है कमलेश जी इस बजट से हो सकती है? देखिए सर, जो हाई लेवल जो अमीर लोग हैं उनके लिए ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, जैसे मामले, हाँ, मीडियोकर जो मीडियोकर लोग हैं, जिसे हम बोलते हैं कि आम लोग हैं, आम लोगों को डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बजट से रहती है, क्योंकि वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है उनकी इनकम को, सीधा इम्पैक्ट करता है। आज अभी जो न्यू टैक्स रिजीम, जैसे 7 लाख रुपए तक किसी की इनकम में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, अगर यही अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये लिमिट 7 लाख से बढ़ा के 8 लाख 10 लाख रुपए तक अगर हो जाए, तो सीधा सीधा टैक्स पेयर के जेब पे फर्क पड़ेगा, उनकी इनकम बचेगी, टैक्स सेव होगा। जी जी, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। दूसरा जो बात इसमें कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में एनपीएस को शामिल करना, ये भी बात अभी जो हमारे तमाम इकोनॉमिस्ट या हम रिसर्च पढ़ते जा रहे हैं उसमें बात सामने आ रही है। सेक्शन 80C की लिमिट में बढ़ोतरी की बात भी सामने आ रही है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की लिमिट में तेजी बताई जा रही है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव भी संभव है। ये 5 बातें जो बजट के टैक्स पेयर के उम्मीदों से जुड़ी हुई है,
इनको थोड़ा सा कमलेश जी अगर आप साधारण आसान भाषा में और आम लोगों को जो जानकारी, क्योंकि बड़ी टिपिकल होती है इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं जो है, तो इसको जरा सा अगर आप साधारण भाषा में समझा पाए। मैं आपको बताता हूँ सर, 80C के अंदर सारी के सारी डिडक्शन, चाहे प्रिंसिपल और होम लोन का जो पेमेंट करते हैं वो भी आता है। आप एनपीएस 80C से थोड़ा एडिशनल आता है, 50,000 की अलग डिडक्शन होती है। न्यू पेंशन, नॉर्मल प्रोविडेंट फंड्स वो भी 80C में आता है। इंश्योरेंस की पेमेंट करते हूँ वो भी 80C में आता है। तो टोटल जो डिडक्शन 80C की है वो सब के सब टोटल आज की डेट में 1.5 लाख रुपए है। एनपीएस में एडिशनल है 50,000, लेकिन ये बेनिफिट तो अवेलेबल उनको है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम के लिए ये डिडक्शन 0 है, उनके लिए कोई डिडक्शन नहीं है। तो अगर इनको बढ़ाने का मतलब है सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को आगे कैरी करना चाहती है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है जी। न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए तो स्लैब बढ़ाई जाए, ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए ये जो डिडक्शन का लिमिट बढ़ाई जाए। जो 1.5 लाख, इतने कई सालों से 1.5 लाख आपने देखा होगा 80C की डिडक्शन, बिल्कुल। से 1.5 लाख है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़ती रहती हैं, लेकिन डिडक्शन नहीं बढ़ रहे हैं। तो डिडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। ये 1.5 लाख की डिडक्शन 2 लाख 2.5 लाख करने की जरूरत है। मतलब जो सेक्शन 80 की जो लिमिट में बढ़ोतरी की बात आ रही है उसमें यही है कि अब उसको जो है 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख या 2.5 लाख तक किया जा सकता है। जी जी जी, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ही होगा। जी जी। और इसमें जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की लिमिट की बात सामने आ रही है, इसमें क्या कमलेश जी हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ, होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है सर, वो दो तरह के होते हैं। एक तो सेल्फ ऑक्युपाइड है प्रॉपर्टी, या फिर लेट आउट है प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे डिडक्शन मिलता है हमें सर 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट का। जी। 2 लाख रुपए तक डिडक्शन मिलता है, और ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये लिमिट अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में इसकी लिमिट, क्योंकि 2 लाख भी काफी साल हो गए, बढ़ा नहीं है, तो ये लिमिट 2 से 3 करने की जरूरत है। क्योंकि लोग एक्चुअली जो न्यू टैक्स रिजीम है, इससे लोग ना थोड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अभी क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स सेविंग करने के पर्पज से ही सही लोग इन्वेस्ट करते थे, घर खरीद लेते थे, या इंश्योरेंस में पैसे लगा रहे हैं, या एनपीएस में डाल रहे हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेते थे टैक्स सेविंग के पर्पज से। लेकिन अगर मुझे यही पता लग जाए कि मुझे टैक्स सेविंग करने से, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं बच रहा है, तो पीपल विल ऑप्ट न्यू टैक्स रिजीम, जिससे फ्यूचर के लिए उनको सेविंग नहीं होगी। चाहे वो टैक्स बचाने के पर्पज से, एट लीस्ट वो अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट न्यू टैक्स रिजीम वो बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक तरह से डिसअपॉइंटिंग है न्यू टैक्स रिजीम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी बिल्कुल। ये कमलेश जी, एक सबसे बड़ा हमेशा से देखा जाता है कि घर खरीदना है, घर एक सपना होता है, और इसमें क्या घर खरीदारों पर ये टैक्स का बोझ कम करने का भी कोई प्राविधान या कोई नियम इसमें आप देख सकते हैं कोई घोषणा में? सर देखिए, बिल्कुल सही। जो छोटे टैक्स, जो 1 BHK 2 BHK या बड़े शहरों में छोटा घर ले पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। जो मिडिल कैटेगरी के लोगों के लिए, लोअर तबके के लोगों के लिए, डेफिनेटली अगर घर में छूट के लिए एक ऑलरेडी स्कीम है, और इस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है कि जो उनके स्टैम्प ड्यूटी के पैसे होते हैं उसको डिडक्शन मिल जाता है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीदें। तो टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्टेन इनकम का आप एक लिमिट बढ़ाई जा सकती है कि जो पहला घर खरीदा है उसके उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स की एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या है, तो जिनके पास 2 3 4 घर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार घर खरीद रहे हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है। और हम हर जगह, खासकर से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, या हम उन शहरों की बात करें जहां पे बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा हुआ है, नौकरियां करने लोग जाते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा सपना होता है कि एक छोटा सा घर, ताकि इंसान अपने परिवार के साथ में वहां पर रह सके। लेकिन इन टैक्स स्लैब में क्या उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये वर्ग आता है, और इनके लिए क्या कुछ कमलेश जी हो सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है? तो कुछ करने को सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है इस सेगमेंट को ध्यान में रखते, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम, ज्यादा लोग इस कैटेगरी में हैं। तो ज्यादा से ज्यादा, मैंने अभी जैसे बता रहा था कि घर खरीदने के लिए एक इंसेंटिव दे सकते हैं कि पहला घर के ऊपर सर्टेन जो
जो लाइफ में पहली बार घर खरीद रहे हैं उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स में डिडक्शन मिल जाए, या स्पेसिफिक डिडक्शन लेके आया जाए जिससे कि लोग पहली बार ज्यादा से ज्यादा घर खरीदने पे ध्यान दें। बड़े शहरों में ऑलमोस्ट 60% लोग रेंट पे रहते हैं, वो रेंट देते हैं, रेंट उन चला जाता है, बट अगर वो इंसेंटिव के फॉर्म में अगर सरकार उनको इस तरह से कुछ वे आउट निकालती है जिससे कि वो चाहे लोन लेके घर खरीदे, उस लोन जो ईएमआई जो रेंट के रूप में वो अपना पे कर रहे हैं, रेदर की पेइंग रेंट, उसको एज ए ईएमआई पे करके अपना घर बनाए, तो ये अच्छा बेटर होगा कि कोई सरकार इस तरह के कोई इंसेंटिव स्कीम लाती है, एडिशनल टैक्स बेनिफिट देती है उन लोगों के लिए जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, जिससे मोटिवेट होंगे लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीदने में और अपना आशियाना बनाने में। जी कमलेश जी, और ये हाउस प्रॉपर्टी हम जब खरीदते हैं तो उसके लिए, कमलेश जी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। अच्छा, आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। मेरा सवाल था कमलेश जी कि हाउस प्रॉपर्टी जैसे हम खरीदने के लिए क्या टीडीएस के नियम को इजी किया जा सकता है, टीडीएस के नियमों को आसान बनाया जा सकता है? जी सर, अभी जो है 50 लाख की लिमिट है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं मोर देन 50 लाख जिसकी वैल्यू होती है, आपको 1% टीडीएस काटना पड़ता है जो बायर को। इस लिमिट को या तो बढ़ा के आप 75 लाख कर सकते हैं, 1 करोड़ कर सकते हैं कि नीचे वाले लोग फ्री हो जाएं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेशन है, इससे इनकम नहीं बढ़ती लेकिन एक टैक्स कंप्लायंस और कॉम्प्लिकेशन होती है, आम लोगों को समझ नहीं आता, कई बार इसमें नॉर्मली लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज हो जाती हैं, एक हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे चार्ज होता है। इसलिए इस लिमिट को जो 50 लाख की लिमिट है इसको बढ़ा के 75 लाख या 1 करोड़ तक ले जाना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। क्योंकि शिशिर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, शिशिर जी से हम यहाँ पर, कमलेश जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, जिससे कि लोग ना ज्यादा से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि बड़े शहरों में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, 50 लाख के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है सर, सबके सब उसके ऊपर ही आ पाती है, तो इसे बहुत, इसलिए ये लिमिट बढ़ाने की जरूरत है, 50 लाख से हटा के 1 करोड़ या 75 लाख की तरफ जाने चाहिए। जी जाने चाहिए। शिशिर जी हमारे साथ, क्योंकि आज शिशिर जी के पास काम थोड़ा ज्यादा है, सुबह से मोबाइल फोन भी बज रहा है और तमाम लोग हैं, मंत्रालय से भी फोन, सब जगह से अपने जो है बातचीतें, शिशिर जी आपसे हमारा कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन अब आप कमलेश जी से हमसे डिफरेंट टैक्स स्लैब में हमने बातचीत की, लेकिन आप इस पूरे इंटरिम बजट को, चूंकि आपने बताया कि ये कुछ ही महीनों का एक बजट होता है, इसमें बहुत बड़ी घोषणा नहीं होती, लेकिन आपने उसका अपवाद भी बताया कि किस तरह जेटली की गवर्नमेंट में उन्होंने बड़ी घोषणा यहाँ पर की थी। तो क्या आज भी ऐसी जो बड़ी घोषणाओं में आपको क्या लगता है कि वो आज अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, ये सरकार कुछ अनूठी है, इस मामले में अनूठी है कि हर समय कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलते रहता है लोगों को। जी, जब लोग बिल्कुल निश्चिंत थे, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी, अचानक एक दिन रात में 8 बजे घोषणा हो जाती है कि भाई कल से ये नोट नहीं चलेंगे। याद कीजिए वो सरप्राइज नोटबंदी का। तो उसी तरह सरप्राइज पिछले बजट तक कोई सोचा भी नहीं था कि पीएम किसान सम्मान निधि आएगी और हर किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना आएंगे यूं ही। अभी तक तो सब्सिडी मिलती थी फर्टिलाइजर पे, अभी तक तो सब्सिडी मिलती थी बिजली पे किसानों को, लेकिन अब सीधे पैसे कैश देने की बात हो गई। तो कब सरकार कौन सा कदम उठाएगी इस बारे में आप कोई कयास नहीं लगा सकते। सरकारी अधिकारी भी इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, वो उतना ही बोलते हैं जितना उनको बोलने का निर्देश है, लेकिन काम तो पर्दे के पीछे चलता ही रहता है, काम चलता रहता है, घोषणाएं होती रहती हैं। अब ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट है तो चुनाव से पहले अभी तक, जैसे पिछले साल याद कीजिए, चुनाव मतलब इंटरिम बजट से पहले कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, लेकिन इंटरिम बजट में घोषणा हो गई थी। तो उसी तरह इस बार भी पिछले 5 साल से इनकम टैक्स से जुड़े किसी प्रावधानों में कोई छूट नहीं मिली है, कोई ढील नहीं दी गई है। हो सकता है कि इस बार मिल जाए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, खास करके लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तो इनकम टैक्स वेतनभोगी सब बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। तो हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ भी, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो या बच्चों की जैसे 1.5 लाख रुपए तक की जो भी छूट मिलती है टीसी में, कमलेश जी बता रहे थे,
वो काफी कम हो गया है। वर्तमान महंगाई को देखिए और स्कूल की फी को देखिए, जिसके 2 बच्चे होंगे और दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आप एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएं, आम आदमी के स्कूल में पढ़ाएं, तो वहां भी 7 से 10,000 रुपए महीने की फी है ट्यूशन की। तो आपको एक बच्चे में जो है 10,000 भी देते हैं तो 1,20,000 रुपए फी हो गया। 2 बच्चे हैं तो आपका 2,40,000 हो गया। उसके बाद आप भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ तो बचाएंगे, क्योंकि अधिकतर आबादी, सरकारी नौकरी तो महज देश में 2% लोगों को है, अधिकतर जी आबादी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करती है और यहाँ पेंशन के लिए आप जो पीएफ वाला पेंशन है वो ऊंट के मुंह में जीरा होता है। हमारे कई सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रिटायर हुए, हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपको पीएफ का पेंशन कितना मिलता है, तो उन्होंने कहा 2,000 रुपए मिलते हैं। तो 2,000 रुपए तो आज पूरे परिवार के लिए महीने भर के दूध के पैसे नहीं होते हैं, सब्जी और फल तो छोड़ ही दीजिए। तो लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, वो एक रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वो बैंक में एफडी करते हैं या कहीं भी निवेश करते हैं। तो निवेश पर भी सरकार छूट देती है इनकम टैक्स में, लेकिन सबको 80C में समेट दिया गया है। आप बीमा करा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो भी उसी में है। आप बच्चों की फी भर रहे हैं, वो भी उसी में है। आप पीपीएफ खुलवा लिए हैं, वो भी उसी में है। आप बच्ची की शादी के लिए या बच्ची की पढ़ाई के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा लिए हैं, वो भी उसी में है। और 1.5 लाख रुपए अब होते क्या हैं, आप जाइए तो 1.5 लाख रुपए, तो हमने बताया कि एक बच्चे आप ढंग के स्कूल में, किसी नामी स्कूल में पढ़ाएं तो 1.5 लाख रुपए आपके एक बच्चे की फी में चली जाएगी। 2 बच्चे हैं तो 3 लाख रुपए, निवेश 1.5 लाख रुपए बचाएंगे, 10,000 रुपए महीने, 12,000 रुपए महीने भी बचाएंगे, वो भी 1.5 लाख रुपए हो गए। तो 1.5 लाख तो ऊँट के मुंह में जीरा है। तो जी सब बिल्कुल। है कि इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अब देखिए निर्मला मैडम कितनी इस बात को समझती हैं, क्योंकि ये तो आम आदमी की पीड़ा है, वेतन भोगियों की पीड़ा है। तो इसको कितना समझती हैं, अब ये तो ये यहाँ पर देखना होगा। और अब तो चूंकि 10:30 बज चुके हैं और बताया जा रहा है कि संसद भवन पहुंच चुकी है। अपना उनके हाथ में उनका वही लाल बैग, उसके अंदर जो बजट टैब रहता है वो वहां पर मौजूद है। और अब से केवल 30 मिनट के बाद में वहां पर निर्मला सीतारमन का वो भाषण, जिसकी प्रतीक्षा यहाँ पर हो रही है, जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कयासबाजी कर रहे हैं, वो आधे घंटे के बाद चीजें बिल्कुल साफ होती हुई चली आ रही है। क्योंकि उसके पहले मैं तो बताऊं कि जीडीपी में जो है बजट अपडेट्स में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। रियल जीडीपी ग्रोथ 2023-24 की पहली छमाही में 7.7% रहा है। 2024 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहा है। 2024 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6 और वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी ग्रोथ 7.2 रही है। तो शिशिर जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। इकोनॉमी में तो विस्तार हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोगों की, मतलब सबकी नहीं, कुछ लोगों की आमदनी घटी भी है, लेकिन लोगों की आमदनी, अधिकतर लोगों की आमदनी बढ़ी है। कोई फल बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, रेहड़ी पटनी लगाने वाला है। तो आप कोरोना काल के मुकाबले देखें तो अभी हर जीवन के हर क्षेत्र में, उद्योग धंधे के हर क्षेत्र में और इकोनॉमी के हर सेक्टर में विस्तार हुआ है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, आप देखिए कि हर व्यक्ति के हाथ में, आप बाहर निकलते हैं, आप ऑटो वाले को देखते हैं, ऑटो रिक्शा वाले को देखते हैं, झल्ली वाले को देखते हैं, आपको कितने व्यक्ति के हाथ में आपको फोन जो है स्मार्टफोन नहीं दिखता है। बहुत कम आदमी के पास देखते होंगे कि टिप टॉप वाला छोटा फोन लेके चलते हैं। तो वो यदि स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपए तो निवेश कर रहे हैं। मीन्स उनके पास इतनी स्पेंडिंग कैपेसिटी है तब तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है, बाजार में मांग बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की मांग बढ़ी है, एफएमसीजी की मांग बढ़ी है, एफएमईजी की मांग बढ़ी है। और जब इन सब चीजों की मांग बढ़ी है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो एक अच्छा जो गुड साइकिल है वो चल रहा है। तो ये साइकिल चल रहा है तो उसका प्रभाव आपको जीडीपी पर भी दिखेगा। तो जीडीपी हमारी बढ़ रही है। इस समय तो आईएमएफ का कहना है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट में आगे हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब कंट्री है चाइना है, चाइना से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आगे है।
हालांकि ग्रोथ रेट में देखें तो हम तो अमेरिका को भी आगे नहीं ठहरने देते। अमेरिका की भी जीडीपी ग्रोथ रेट है जो हमसे धीमी है, लेकिन चूंकि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसका साइज बड़ा है, तो उसका जब साइज वॉल्यूम बड़ा होता है तो 1% भी होगा तो उनका बहुत ज्यादा होता है। हमारी इकोनॉमी उसके मुकाबले छोटी है, तो हम 7% लेके भी उनसे तुलना नहीं कर पाते। लेकिन खैर, अमेरिका अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी उपलब्धि को कोई सिरे से खारिज नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ रही है आमदनी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। जी, ये इनकम अब हमारे दोनों पैनलिस्ट से चर्चा हमारी चलती रहेगी। अब हम इंतजार उस पल का भी कर रहे हैं जब वो स्पीच जो है संसद भवन के अंदर से वित्त मंत्री की हो। लेकिन उसके पहले एक बार मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब, क्योंकि आज बहुत उम्मीद की जा रही है इनकम टैक्स स्लैब का जो उसमें बदलाव हो सकता है। स्लैब जो अभी तक आप ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम करके दोनों, लेकिन इस चीज को एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। इनकम टैक्स स्लैब का जो ओल्ड रिजीम है उसके अंतर्गत क्या नियम है और जो नए न्यू रिजीम है उसके अंदर क्या है। तो अब तो मतलब ओल्ड रिजीम की सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें 2,50,000 तक कोई भी यहाँ पर आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना। फिर 2,50,001 से 5 लाख तक, ये ओल्ड रिजीम की बात हो रही है, यहाँ पर आपको 5% देना पड़ेगा। उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और उसके ऊपर यानी कि फिर 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। ये स्लैब का ओल्ड रिजीम मैं आपको बता रहा था। अब न्यू रिजीम की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो अप टू 3 लाख तक इसमें निल है, कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना। लेकिन 3 लाख से 6 लाख तक 5%, फिर 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, फिर उसके ऊपर 20-15 लाख तक, फिर 15 लाख से ऊपर 30%। मैं इसमें शिशिर जी, जो मैंने अभी इसके दोनों रिजीम को बताया, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ये सही मैंने आपको सही और दोनों को डिफाइन किया है? बेहतर है हमारे टैक्स एक्सपर्ट इस पर कमेंट करें। नहीं नहीं, आपने सर बिल्कुल सही बताया है कि ओल्ड रिजीम में आपने कहा 2.5 लाख था तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5% है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% आता है, और अबव 10 लाख अबव 30% है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम अभी चल रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में आपने बिल्कुल सही बोला है कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 5% टैक्स लगता है, 6 से 9 10%, और 9 से 12 15%, 12 से 15 में 20%, अबव 15 30%। बिल्कुल ठीक है। यही रेट आज फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए यही है। यही है। और इसी में अब हम लोग ये जो बहुत ज्यादा टैक्स पे करने जब हम जाते हैं, उस स्लॉट में भरना, उसको उनकी बारी, क्योंकि कई बार हमको कमलेश जी जैसे तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनसे सहारा लेना पड़ता है, उनकी राय लेनी पड़ती है। तो इसी चीज को कमलेश जी इस बार कवायद है कि आसान किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि पिछले से सालों की तुलना में अब टैक्स रिटर्न फाइल करना वास्तव में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जो रिटर्न्स के फॉर्म्स हैं उसमें बहुत चीज पहले से पॉपअप होके आता है। आपकी कोई सैलरी इनकम है, या आपने कोई डोनेशन दिया है, या कुछ और भी आपकी कोई इनकम है, से एग्जांपल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया, आपने शेयर्स में सेल परचेज किया है, इन सब की इंफॉर्मेशन, या म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन किया है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको टीआईएस एआईएस के रूप में आपके लिए अवेलेबल होता है। वहां से डेटा आप इजिली फिल कर देते हो या प्री फिल्ड हो जाता है। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन ठीक है, आप सेम फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और आपको लगता है कि गलत है तो आप उसमें चेंजेस करके अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत आसान है आज की डेट में रिटर्न फाइल करना। ऑब्वियस बिजनेसमैन के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। अदरवाइज सैलरी के लिए बहुत आसान है, बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय खुद ही अपने रिटर्न फाइल करते हैं। जी जी बिल्कुल। और अच्छा शिशिर जी, एक बात, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हर वर्ग को यहाँ पर खुश करने की कोशिश होती है, और सबसे ज्यादा फोकस, जबकि कमलेश जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 26 जनवरी में जब आपने पूरी कर्तव्य पथ पर जो महिला शक्ति को देखा, उसी तरह आज भी मैं कई जगह पढ़ रहा था कि महिलाओं को लेकर, महिला किसानों के लेकर वहां पर घोषणाएं की जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखा जाए तो किसानों में, मतलब किसान जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे मन में छवि उठती है कि कोई हल जोतता व्यक्ति हो या खाद छिड़कता हुआ कोई व्यक्ति हो।
लेकिन जब से महिला सशक्तिकरण की बात हुई है तो अब महिला किसानों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ी है। महिलाएं अब खेतों में अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उसी तरह अब महिलाएं भी किसान बन रही हैं। तो हो सकता है कि सरकार महिला किसानों के लिए कोई विशेष योजना की घोषणा कर दे। हो सकता है कि सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं के नाम पर जमीन जायदाद अपने समाज में कम ही होते हैं, तो महिलाओं के नाम पर जमीन जायदाद हो, जमीन हो, खास करके खेतीहर जमीन हो, वो खेती करें, तो हो सकता है उनके लिए कुछ विशेष योजना की घोषणा हो जाए। इसके लिए थोड़ा देर हमें और इंतजार करना होगा, देखते हैं वित्त मंत्री के पिटारे से क्या मिलता है। कमलेश जी, अगर जैसे महिलाएं हैं एक ऐसे वर्ग में जहाँ पे छोटे शहर हैं, वहां पर कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, वहां पर वो कारोबार स्टार्ट करना चाहती है, क्या उसके लिए क्या सरकार के अभी जो इस बजट में क्या हो सकता है, या पहले से उनके लिए क्या नियम है कि कम ब्याज दर में उनको पैसा मिल जाए, जबकि अपना वो लघु कुटीर उद्योगों को वो डेवलप कर सके, अपने साथ 4 लोगों को और वहां पर जोड़ सके? सर देखिए, पहले से एमएसएमई लोन अवेलेबल हैं छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए। बैंक से हमें एमएसएमई लोन मिल रहा है जो कि नॉर्मल बैंक रेट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जो कि बहुत लोगों को हेल्प हो रहा है। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, साहूकार या महाजन के पास जाके प्राइवेटली हायर टैक्स इंटरेस्ट रेट पे हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते थे, जो कि बहुत उनको कॉस्ट आती थी। लेकिन जब से एमएसएमई लोन लोगों को मिलना आसान हो गया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, तो ये चीजें बहुत उनको फ्रूटफुल हो रहा है। लोग अपने, इवन चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, छोटे लेवल के बिजनेसमैन बैंक से पैसे लेके, कर्ज लेके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये एमएसएमई लोन इनको बहुत हेल्पफुल हो रहा है, जिससे कि अगर आपने देखा होगा कि जो कुछ महाजन या इस तरह के फाइनेंस बिजनेस में अवेलेबल थे अनऑफिशियली, उन लोगों का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। क्योंकि ये काम अब एक चैनल के थ्रू, फॉर्मल चैनल के थ्रू, बैंक के थ्रू होने लग गया है, विच इज एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है देश के, बिकॉज हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप की तरफ जा रहे हैं। ये उसका बहुत अच्छा साइन है कि एमएसएमई लोन अवेलेबल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो, तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और लोग इसके अंदर कवर हो, लो कॉस्ट पे उनको छोटे बिजनेसमैन को एक फंड अवेलेबल हो। जी सर। शिशिर जी, ये जो एमएसएमई जिसकी बात की, चर्चा की, हमेशा ये सरकारों की स्पीचेस में और उनके में तमाम बड़े बड़े आंकड़े की इतने लोगों ने लोन लिया, इतने युवाओं ने लोन लिया, लेकिन वो प्रोसेस जब हम कई लोगों से बात करते हैं, आम लोगों से, कहते हैं ये प्रोसेस बहुत लंबी है जी, हम बैंक जाते हैं हमको लोन नहीं मिलता है। लेकिन ये जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि 20,000 करोड़ का जो है लोगों ने एमएसएमई में लोन लिया, या युवाओं ने इतना लोन लिया। ये प्रोसेस क्या वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है लोन लेने की और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने की? हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में गौर नहीं किया या बैंक जाके हमने अधिकारियों से बात नहीं की। क्योंकि बैंक अधिकारी, आप छोटा सा होम लोन या पर्सनल लोन भी लेना, तो आपसे 20-25 पेज का वो भरवाते हैं बैंक अधिकारी। ढेर सारी चीजें पूछते हैं आपसे, सैलरी स्टेटमेंट लेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल लेंगे, पैन आधार तो लेंगे ही, और पूछेंगे कि आपके नाम कोई चल संपत्ति है, अचल संपत्ति हो। दरअसल बैंक वाले अपने लोन को खराब या बैड लोन नहीं करना चाहते, इसके लिए वो सामने वाले से उनकी रिपेइंग कैपेसिटी के बारे में पूरी पूछताछ करते हैं। यदि सामने वाले की रिपेइंग कैपेसिटी ठीक नहीं है तो वो चाहते हैं कि कोई गारंटर मिल जाए या कुछ और चीजें, कोई रेहन रख दे, बंधक रख दे। तो हो सकता है कि कारोबारियों को कहीं दिक्कत होती होगी, क्योंकि ढेर सारे लोग, जैसे हमें, मेरी ही एक सब्जी बेचने वाले से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बैंक गए थे लोन लेने, बोला तुम्हारे पास पैन कार्ड है? तो हमने कहा नहीं है। वो बैंक वाले पूछते हैं कि तुम आईटीआर दाखिल करते हो? तो उसने कहा नहीं। बोला तुमको कुछ नहीं मिलेगा, 10 पैसे का लोन नहीं मिलेगा। तो अपने अपने नियम, अपने अपने कायदे हैं। अब देखिए इसमें इसी के बीच राह निकलनी है, इसी के बीच सब चीज होना है। तो बैंक वाले भी काफी हद तक अपने नियमों के पालन में लगे होंगे।
शिशिर जी, कमलेश जी हमारे साथ दोनों लोग बने रहिए। अभी हम इस समय की अपडेट आपको बता दें कि अब 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, जबकि भाषण जो है वो इंटरिम बजट का निर्मला सीतारमण यहाँ पर शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस के सांसद मानिक चंद टैगोर हैं, आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं बजट के बारे में। Always people eagerly watch the union budgets, state budgets as well. Here the point is that whether the government will introduce any pro-people policy which is beneficial to the common man of this country. Apart from rhetoric and distorted facts, this government is not doing anything for the general public. For example, when the UP, NDA government came into power in 2014, the major campaign of the NDA, especially the BJP, was against petroleum price hike. Many programs, jada speeches you can see still available in YouTube. The promise was to reduce the amount of petroleum products, including diesel and petrol, to minimum to 50 rupees. Now what is? तो आप ये सुन रहे थे, वो लगातार आसान वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो आम लोगों को, उससे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार जो है ये तमाम बातें मानिक चंद यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे विपक्षी पार्टियों की तमाम यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हम सुबह से सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जो सरकार है, इसमें इस सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। इन दोनों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या शिशिर जी वास्तव में कुछ ऐसा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और रईस रईस होता जा रहा है? जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी ग्रोथ रेट सारे प्लस में दिख रहे हैं, आपको सब ऊपर से ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन लगातार, अब मैं खासकर कांग्रेस की बात करूं, राहुल गांधी इस समय न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी जगह जगह जाके इसी बात को उठा रहे हैं कि देखिए हम हर हाशिए पर जो लोग हैं उनको उठाने की कवायद है, लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है और रईस रईस होता जा रहा है। देखिए, इसमें इसका सबसे अच्छा विश्लेषण होता है आर्थिक समीक्षा से। इस बार बजट से पहले आर्थिक समीक्षा आई नहीं। आर्थिक समीक्षा में ही सब चीज का आंकड़ा रहता है, चाहे गरीबों का आंकड़ा हो, अमीरों का आंकड़ा हो। इवन ये भी उसमें रहता है कि पोस्ट कार्ड, हर एक पोस्ट कार्ड को बेचने में सरकार को कितना घाटा हो रहा है। तो जब तक आर्थिक समीक्षा ना आ जाए तब तक हवा में तलवार भांजने से बेहतर है कि सामने आपके कुछ कागज हो जी। तो हमें लगता है कि जब तक सरकार की तरफ से पेपर ना आ जाए तब तक इसको पॉलिटिशियन के बीच ही रहने दिया जाए। हम लोग तो आंकड़े पर बात करेंगे यहाँ। और लेकिन जी पहले क्या आंकड़े थे? पहले के अगर मैं, इस बार आर्थिक समीक्षा नहीं है लेकिन जब आई थी वो पहले का अगर आपको कुछ जिक्र कर पाए, क्या इन दोनों के बीच में क्या फासले थे? इस समय देखिए, आप उसके लिए आपके पास बोलने के लिए पूरी तैयारी की जरूरत होती है जी। आंकड़े उसके लिए निकाल के रखने होंगे। तो हम लोग थोड़ी देर बाद बजट के बाद बैठते हैं तो फिर सारे अब बजट की भी बिल्कुल। इस समय हम सुन लेते हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल है, फाउंडर एंड चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के। वो जो है बजट के बारे में लगातार इंडस्ट्रियलिस्ट की बाइट आ रही, हमसे बात, वो क्या कह रहे हैं एक बार उनको सुनते हैं। अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री लुकिंग लाइक ए वाओ, बिकॉज आप ये देखिए कि पिछले 2-3 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बहुत एक नया चैप्टर देखा है, बहुत उछाल उसमें दिखाई दिया है। और जो लोग पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे घरों के लिए, उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी है। आज के इस बजट से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जो बजट है इसमें रियल एस्टेट को उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने होंगे। अगर वो बेनिफिट मिलेंगे तो एक जो आम इंसान है उसके घर का सपना पूरा हो सकेगा। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खास करके जो होम लोन के ऊपर मिलने वाली जो छूट है, जिसे हम CLS स्कीम कहते थे, 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल में वो हमें मिलती थी, जो बायर को मिलती थी, वो मुझे लगता है आज फिर से रिस्टोर होनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात कि इंडस्ट्री का स्टेटस
बहुत टाइम से पेंडिंग है रियल एस्टेट को, मुझे लगता है वो मिलना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सोचा जाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि जो होम लोन के ऊपर, जो होम लोन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का एक रिबेट मिलता है। उस 2 लाख रुपए के रिबेट को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। और आज वैसे वित्त मंत्री जी के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर रियल एस्टेट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक अगले आने वाले टाइम के लिए दिशा मिलेगी। अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री लुकिंग लाइक ए वाओ, बिकॉज आप ये देखिए कि पिछले 2-3 साल में तो आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि रियल एस्टेट में बूम है लाइक वाउस। कमलेश जी, थोड़ा इनकी बात को आप आसान भाषा में ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आप इन्हीं की बातों को आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। सर देखिए, ऐसा है जैसे बताया जा रहा था कि जो अभी होम लोन का इंटरेस्ट पे डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए है। उन्होंने भी ये बात कही और अभी भी है, और ये कई सालों से है। तो इस लिमिट को, कि लोगों को अगर टैक्स सेविंग करने के लिए होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख से बढ़ा के, जैसे सर बता रहे थे इनकी एक्सपेक्टेशन 5 लाख हो जाएगी, तो 5 लाख ना हो तो 3 लाख 4 लाख कुछ तो हो, वो लिमिट बढ़नी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग घर खरीदने के लिए लोन लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली उसमें बाइंग आएगी, रियल एस्टेट बूम होगा और लोगों के लिए घर अवेलेबल होंगे। अभी लोग किराए पे रह रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होंगे अपने लिए आशियाना खरीदने के लिए, और उसमें टैक्स छूट मिलेगी इंटरेस्ट के ऊपर। ये कह रहे थे जी। यहाँ पर एक बार सुन लेते हैं, कांग्रेस सांसद यहाँ पर आए हुए हैं, वो बजट के ऊपर क्या कहते हैं, एक बार उनको भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन विपक्ष किस तरीके से देख रहा है? मोदी जी के कार्यकाल का नहीं, मोदी जी की सरकार का अंतिम बजट। जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, अब दोबारा मोदी जी लौट के नहीं आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इस देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी। मैं देखना चाहता हूं उस पर उन्होंने क्या सार्थक कदम उठाया। जब ये 2014 में आए थे, तब क्या था? कर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कर्जों का बोझ वो कई गुना बढ़ गया। तो निश्चित रूप से मैं देखना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जा बढ़ा हुआ है उसके कितना पाटा इन्होंने, कितना कम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बहुत समस्याएं हैं, उद्योग नहीं लग रहे हैं, चंद घरानों को ही सारी सुविधा दी जा रही है, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब मिलाकर अगर आप देखें तो ये प्रतीक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय कर्जा। क्या एक्सपेक्टेशन विपक्ष किस तरीके से देख रहा है? मोदी जी के कार्यकाल का नहीं, मोदी जी की सरकार का अंतिम बजट। जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, अब दोबारा मोदी जी लौट के नहीं आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इस देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी। मैं देखना चाहता हूं उस पर उन्होंने क्या सार्थक कदम उठाया। जब ये 2014 में आए थे, तब क्या था? कर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कर्जों का। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कि सरकार के ऊपर तमाम तरीके के सवाल उठाते हुए उन्होंने इंटरनेशनल कर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का बोझ बढ़ा है 2024 से पहले। वो कह रहे हैं कि कितना था, आप कितना है, रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या है, और उसके अलावा यहाँ पर महंगाई सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों से सरकार कैसे निपटती है। और एक सबसे बड़ा जो उन्होंने बयान दिया है इसमें, वो कह रहे हैं कि ये अंतरिम बजट नहीं, ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है, इसके बाद से इलेक्शन होंगे और सरकार की वापसी जो है वो संभव नहीं है। फिलहाल ये विपक्षी नेता है, इनका तो सरकार के प्रति सवाल करना इन लोगों का अपना कर्तव्य है और वो प्रमोद तिवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि 10:52 हो गए हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कमलेश जी और लगातार शिशिर जी मौजूद रहेंगे, और जैसे ही ये भाषण शुरू होगा, निर्मला सीतारमन जैसे एक एक करके अपने पत्ते वहां पर उनके टैब से आगे निकलेंगी चीजें, वैसे वैसे हम आपको यहाँ पर
अपने विशेषज्ञों से उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि उसके मायने क्या है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें इकोनॉमी में होती हैं और कुछ भाषण जिसको आप आसान भाषा में समझना होगा क्या चीज वो उनके टैक्स स्लैब में अगर चेंजेस हुए तो वो क्या चेंजेस हुए, वो किस तरह के चेंजेस हैं। तो हमारे साथ कहीं मत यहाँ जाइएगा मत, और 11 बजे तो जैसे ही भाषण शुरू होगा हमारे साथ में हमारे कमलेश जी जो हमारे सीए हैं हमारे साथ पैनल में लगातार चीजों को आसानी भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। उसी के साथ शिशिर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, दोनों पैनलिस्ट, इसके साथ और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोग, वो आपको बेहतर समझा पाएंगे कि किस क्षेत्र में इस पिटारे में इस बजट में एंट्रीम बजट में क्या निकला है। फिलहाल बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। अरे छाता बंद करूं? अरे ये नहीं, छाता बंद कर दो यार, छाता पीछे कर दो। क्या करो बैठक के बाद बजट को बैठक में रखेगी, बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना के थोड़े रह गए वो आई थिंक वो सब जांच के रिफॉर्म होने चाहिए। बिकॉज अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे जो टैक्स प्रैक्टिस है वो थर्ड वर्ल्ड की तो नहीं होनी चाहिए ना। तो हमको ऑपरेट भी करना है अभी जैसे लाइक ए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ टैक्स कलेक्शन, ईज ऑफ एवरीथिंग में मैं जोर समझ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमको अभी जानना पड़ेगा कि इंडिया अभी ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है। हम ये नहीं कह सकते इंडिया से ही बढ़ेगा, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। और तब हम मैं देख रहा हूँ काफी कंपनियां आज फॉरेन में कंपनियां सेटअप कर रही है। आज इंडियन HNI फॉरेन जाके अपना इनकम टैक्स का रेसिडेंसी ले रहे हैं। वो क्यों? वो क्योंकि वो एक टैक्स आर्बिट्राज है। मेरा खुद मानना ये सॉल्व नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, इससे तो इंडिया का फायदा है कि आपको ऐसा एक सिस्टम करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल इनकम है, आपकी बिजनेस इनकम हो कि ग्लोबल पर्सनल इनकम हो, उसको इंडिया में एक अलग स्लैब से टैक्स किया जाए। उससे फायदा क्या होगा कि इंडिया में रहेगा, इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। और इससे ओवरऑल मेरे हिसाब से एक जो आज जो मैं देख रहा हूँ, आप देखो एक होड़ चढ़ी है
भी ये चला गया दुबई, ये चला गया सिंगापुर, ये कंपनी ने स्टार्टअप वहां से खोला। वो क्यों भैया? जब हम गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं गिफ्ट सिटी आगे करो, हम आपको टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये बाकी सेक्टरों में, वो खाली फाइनेंस के लिए, तो बाकी सेक्टरों में क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा ये मानना है कि इसकी एक जरूर है। और ये जो चला है कि भाई बड़े लोग को बड़ा टैक्स दो, वो भी गलत है। आज हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबका टैक्स भी होना चाहिए बराबर। तो ये मैं मानता हूँ एक टैक्स रेशनलाइजेशन की जरूरत है। बजट के ठीक पहले एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें मोबाइल कंपोनेंट की इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, जिसमें लेबर मिनिस्टर ने इसको करा है कि वुमेन सेंट्रिक जो भी रूल्स हैं उसको लागू किया जाए। इस क्या माना जाए कि हम एक ये बजट जो है एक एक्सपोर्ट हब की तरह इंडिया को डेवलप करने की बात की जाएगी और वुमेन को और मोर एम्पावरमेंट दी जाएगी? ग्लोबल तो मैंने अभी बताया, इंडिया अभी ग्लोबल इकोनॉमी में जुड़ गया है। इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल से लिंक हो गई है और हमारा ग्रोथ ग्लोबल से लिंक्ड है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया रहा ही नहीं है, मेक इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट ही है। तो इसीलिए जो भी हमको करना है वो ग्लोबल इकोनॉमी की तरह करना है। और ये जो आप इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं, वो भी एक ग्लोबल लेवल पे होने चाहिए, जो फॉरेन डेवलप कंट्रीज के होते हैं, मेरा फुल्ली मानना है। और हमको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कराना है, इंडिया को एक कंज्यूमिंग लेड नहीं बनाना है। तो आज मोबाइल की आप बात करो, मोबाइल में पार्ट लगा के असेंबली करे, वो नहीं करना है। हमको मोबाइल इंडिया में बनाना है, हमको इंडिया में गाड़ी बनानी है, हमको असेंबली नहीं करनी ना, हमको खाली इंडिया को कंजम्पशन मार्केट बनाए। और जो वुमन की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से लॉन्ग पेंडिंग था इंडिया में वुमन। आज हमारे घर में भी देख लो, वुमन को एक अलग ही दर्जा है। और आई थिंक इकोनॉमी मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैडम सेंटर, मैम सेंटर। मैम बैठक के बाद बजट को बैठक में रखी गई, बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैडम सेंटर, मैम सेंटर। माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future
with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole-of-nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption,
and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social-economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups.
empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate.
People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote.
Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up
to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing
operations of passenger trains, to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore.
Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP.
improving on the budget estimate notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honourable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders
view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high sustainable growth path
with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honourable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honourable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach, the Finance Minister has said that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned,
it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at the details. Thank you. Single ID लेना भाई? हाँ. मैम दिस साइड आपको दिखाई देगी। मिडिल क्लास के लिए भी हाउसिंग के लिए स्कीम का अनाउंसमेंट करिए। राइट, तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या चॉल्स या ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, तो वित्त मंत्री जी ने कहा है उनके लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आज की बजट अनाउंसमेंट में उस स्कीम को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन क्वाइट होपफुल कि अगर उन्होंने इसको कोट किया है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें वो स्कीम दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस दिया गया है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो निकल के आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने के लिए ये एक पहल जो समझ आ रही है वो है इनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी का 2014 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये 2024 तो एक केवल उसका पड़ाव है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देंगी। और एक जैसा आप देखिए कितना बेस चीज़ किया है कि जो रेलवे कॉरिडोर है उनकी अनाउंसमेंट की है। दूसरी बड़ी बात क्या किया है कि क्योंकि जो रेलवे का अनुभव है लोगों का, वो इंक्रीमेंट किया जा सके, ज़्यादा बेहतर किया जा सके, तो जो रेलवे बोगीज़ हैं उनको इंक्रीज करके उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके वंदे भारत के लेवल तक लाने की बात की गई है, जो एक बहुत विजनरी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने को अच्छी हैं, लेकिन बिकॉज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं कुछ और उम्मीदें कर